Hello students, welcome to the next lecture on the inner product space. Today we will discuss what is the norm and what are the various properties. I will explain you with the help of the various numerical examples. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. Now what we have discussed so far, we have learned the concept of the inner product space and the various numerical examples which are very useful for the CSR net and the GATE examination. फॉर मोर डिटेल यू कैन फॉलो माई प्ले लिस्ट इनर प्रोडक्ट स्पेस. आप देख सकते हो इस पूरी प्ले लिस्ट में दिस प्ले लिस्ट पूरी की पूरी इनर प्रोडक्ट स्पेस पे डेडिकेटेड है. तो बाकी लेक्चर्स बड़ी जल्दी अपलोड करूंगा. फाइन, टिल देन यू कैन लर्न द लेक्चर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस सीरीज. चलिए, व्हाट इज द नॉर्म ऑफ द वेक्टर. क्या इस लेक्चर को हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में समझेंगे. मान लो कि आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है. Assume there is an xy plane. Consider any point A whose coordinates are x1 and x2. Fine. And this point is my origin. So what is that? This OA is my vector. Fine. OA is my vector. So can you find the distance of this vector quantity? You can use the distance formula by called as x1 square plus x2 square. यही होगा आपके पास. Fine. And that is called as the distance formula or called as the absolute value of the point OA. But हमने last lecture inner product में क्या सीखा था? We can also write x comma x. What is x? If I choose x is my x1 comma x2, by using the standard inner product, I can write this number is x1 square plus x2 square. Why? Because inner product of xy over the real I can define as summation of xi yi. Is it okay? So over the standard inner product I can write x comma x. Inner product is x1 square plus x2 square. So therefore what you obtained, that means the length absolute value of the vector is square root of x comma x. That is the inner product. Fine. Based on this concept we can try to learn the concept of the norm of the vector. Fine. So first of all remember students, norm is my function. अगर ये norm function है तो इसकी कोई ना कोई एक डोमेन होगी. फाइन. अगर डोमेन है तो इसकी एक को डोमेन भी होगी आपके पास. क्लियर. नाउ तो जब भी नॉर्म की बात करेंगे तो वो हमेशा एक वेक्टर के ऊपर डिफाइन होता है. कभी भी स्केलर पे डिफाइन नहीं करेंगे नॉर्म. स्केलर पे हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन होती है. नॉर्म हमेशा वेक्टर के लिए डिफाइन होता है. So I can define the norm if V is my inner product space. V may be the real, maybe the polynomials, fine, maybe the continuous functions or complex numbers. Then we can define the norm of the vector x is, it is denoted by double vertical lines. That is defined as the norm of the vector. It is defined as root x comma x. That is the inner product of the x comma x. Now, as I mentioned you, norm is a function. So how you can define the function? So it's a domain is my x. X is the element of the V. So it's the domain is V, and because it's a root, so we call as a positive square root. 0 to infinity is my co-domain. So norm is a vector. Norm is a function whose domain is my vector space. Co-domain is 0, infinity, and किसी भी फंक्शन को नॉर्म तभी कहा जाएगा if it satisfied my four properties. Fine. And those four properties are totally related to the inner product. The first one is the norm must be positive for all the non-zeros elements vectors. Norm will be 0 if and only if vector is itself a 0. That is a scalar property, and that last property is called as the triangle property. Fine. अगर इन चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती देन वी कॉल एज इट इज नॉट अ नॉर्म. चलिए, वंस यू कैन डिफाइन द नॉर्म आई कैन से u इज एनी वेक्टर, देन वी कैन डिफाइन द यूनिट वेक्टर इज u divided by norm of the vector. For example, if I ask you can you calculate the norm of the vector, so what I can do, इसको x ले लेते हैं. Let's say x is my 2, minus 3, 6. It's a vector of the r cube. Then we can define the norm of the x is root inner product of the x and x. Fine. So can you define the inner product on the r cube?
because it is defined on the R. So I can define the inner product is the standard inner product, that is xi y. Fine. So I can find the value of the norm. I can find the value of the inner product of the x and. So that will be x and x. That is the same number. That is a 2 square plus minus of 3 square plus 6 square. So that will be 4 plus 9 plus 36. That will be 49. So therefore, I can substitute the value. Norm is always a positive value. That will give you the 7. Why is a positive? You can see the domain is my positive 0 to infinity. Fine. So once you can define the norm is 7, the corresponding unit vector. So what is the definition if the unit vector is u divided by norm of the u. So यहाँ पे u की जगह पे आपको क्या दिया हुआ है, that is x divided by norm x. So x की वैल्यू कितनी है 1/7 और सॉरी norm of the x is 7 और x की वैल्यू है 2 minus 3 6 or you can write as a 2/7 minus 3/7 and 6/7 is the right answer of the problem. Now, what are the various properties of the norm? And it's a very important. पूरा inner product space आपका इस norms के ऊपर defined है. Fine. चलिए, suppose x belongs to V, then the norm of x is 0 if and only if x 0 and alpha of x where alpha is in F. What is the F? F may be the real or it may be the complex number. Chaliye, it's a very simple proof. I can assume x is any element in the V. By the definition of the norm, we can say norm of x is root x comma x. But what is the definition of the inner product space? What is the definition of the inner product? That we discussed in our last lecture. You can see examples of the inner product or the concept of the inner product space. We all know inner product x comma x is 0 if and only if x is equal to 0. That's the definition of the inner product. Fine. Now you can substitute the value in the definition, which implies norm of the x is 0 if and only if x is equal to 0. And that's the proof of the first property. Look at the second proof. That is norm of the alpha x. Fine. I can use this definition. I can put as a square which is equal to alpha x comma alpha x. ये definition बन जाएगी norm की. Now you can open that. I can use the definition of the alpha x comma y which is equal to alpha is outside x comma y. तो यहाँ पे alpha आपका it is outside x comma alpha x. What is the property of the second product? X comma alpha y. It will be alpha bar is outside x comma y. Now you can use this. इस alpha को बाहर निकालेंगे. That is the alpha. Fine. That is my x comma x. Because alpha is in the F. Real भी हो सकता है, complex भी हो सकता है. So alpha into alpha. That is the alpha. Fine. This value will be norm of x square. So the the left hand side is alpha x norm square, and norm is always the positive value. So you can see the norm of alpha x is absolute value of the alpha. Norm of the x is the required proof of the result. Fine. Make sure students, if alpha is in the R, fine, so norm of alpha, fine, so you can change accordingly. So उस case में what is a complex conjugate of the alpha? If alpha is in the R, that is still as a alpha. Next property. If V is a real inner product space, we have to prove this quantity. First of all, it is given as a real inner product. Real inner product means that value will be same. Fine. अगर ये real नहीं होता, then it must be complex conjugate. But for the real case, complex conjugate of the any element is the same element. Clear? Now अब आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. x प्लस वाई कोमा x माइनस वाई. सबसे पहले बच्चों इसको लिखना सीख जाओ, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ लिखने पे डिपेंडेंट है. कैसे करेंगे? पहले इस x को दोनों के साथ करेंगे. दैट इज x कोमा x. फाइन. इस नेगेटिव x एंड y. क्लियर? फिर y को करेंगे प्लस y एंड x
and then plus minus is minus y and y. Is it okay? Fine. अब आप fill कर दो वैल्यू, किसकी वैल्यू गिवन है आपके पास, एक्स वाई एंड वाई एक्स आर सेम, so that value will be cancelled. How you can write in terms of the norm? This value is the norm of x square minus norm of y square is the required proof of the second property. Look at the next one. If x and y are the v, now you can say v may be the real or it may be complex, and prove that no x is equal to y. Fine. इसके लिए क्या प्रूफ करके दिखाएं हम? अगर मैं ये प्रूफ कर दूं x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ओवर. फाइन. हाउ यू कैन लिंक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्म? नॉर्म की एक प्रॉपर्टी बताई थी ना आपको, नॉर्म ऑफ x इज जीरो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे x की यहाँ पे x प्लस x माइनस वाई है, सो माई टारगेट इज टू प्रूफ नॉर्म ऑफ x माइनस वाई टू बी जीरो. फाइन. तो नॉर्म ऑफ x minus y, we can start from the square. That number will be x minus y comma x minus y. Fine. I can open this norm. So पहले x के साथ दोनों कर दो, x comma x minus x comma y. Then you can write with respect to y comma x. Fine. Minus minus plus y comma y. You can substitute the value. This number will be norm of x square. Fine. X comma y value will be 1. Y and x is not given, so I can write in terms of the y and x. I can take it as a complex conjugate of this by the property of the inner product space. Fine. Now you can substitute the value. Norm of the x is 1. It's a 1 square minus 1 complex conjugate of the 1 and plus 1 square. Because 1 is a real number, fine, complex conjugate of the 1 is again 1 plus 1. So you can see that number will be 0. So left side is a norm x minus y is a 0. Hence x is equal to y is the required proof. Look at another one. V is a real inner product. That means x and y is same as y and x. Fine. So our target is to start from norm of xy square, norm of x minus y square. I can write by the definition in the terms of the inner product x plus y, x minus y, and this value will be x minus y, sorry, x plus y, and the second value will be x minus y, x minus y. Can you open this bracket? X and x, fine, plus x and y plus y and x plus y and y. So you can write that number will be norm of x square plus, because norm of xy, inner product of the xy and yx are same, so I can write this number is twice of xy plus norm of y square. Similarly, I can open this second part. It's a x comma x minus, पहले x के साथ कर देते हैं, then you can write with the y minus y comma x minus minus plus y comma y. So I can write this number is norm of x square minus twice of the x and y plus norm of y square. Now you can substitute on the right hand side. Now you can see if you subtract them, fine, तो जैसे माइनस करोगे तो राइट हैंड साइड विल बी 4 times x comma y, and if you substitute on the right hand side, you will get the required result of the problem. Next result is a very famous result, and this is called as the parallelogram equality. Make sure students, in our last result we have used as a subtraction, while in this case we are using as a positive sign. Fine. Again, because in this case v is not a real number, is not a real vector space. Fine. तो ये कुछ भी हो सकता है, बट प्रीवियस में यहाँ पे v रियल दिया हुआ था. अगर ये v it may be real or complex, then how you can write as a xy? It is a complex conjugate of the y and x. Fine. So I can start from the left hand side. My target is to find the value of norm x plus y whole square. Again, I can open this. It's a x comma x plus x comma y
plus y comma x plus y comma y. I can write in terms of the norm. Is the norm of x square plus, because we never know the value of the xy, we never know the value of the yx, plus norm of y square. Similarly, you can open for the below side. It will be norm of x square. X and x is a norm of x square minus xy minus yx, y and y minus minus plus norm of y square. Since you need as a positive sign, if you add them, what will happen? These two values will be cancelled out. The required result will be twice of the norm x square, twice of norm y square. Now, because it's a parallelogram identity, what is the geometrical representation of the parallelogram identity? So if I consider the parallelogram A, fine, say A, B, C, and D. Fine. If I consider the parallelogram whose sides are my x and y, because they are parallelogram, so the opposite sides are same. Clear? So I consider the parallelogram. Now what is the x plus y? AB, because these are the vectors, I can write AC. AC is my x plus y. What is the x minus y? This is my y. You have to opposite the direction. So that value will be my x minus y. यही होगा आपका x plus y and x minus y. Now, what is the property of the parallelogram? What is the property of the parallelogram? We all knows the sum AC square, that is a diagonal square. Fine. It must be equal to the sides AB square plus BC plus CD square plus DA square. यही होता है parallelogram law. Fine. That is a AC square plus BD square is AB square. Now you can see what is the value of the AC? X plus y square. What is the BD? X minus y square. Because AB and CD are same. So that will be the twice of norm x square and twice of the norm y square is the required geometric interpretation of the parallelogram identity. Because in every parallelogram we know the sum of the squares of the length of the diagonal is same as sum of the square of the length of the four sides of the parallelogram. Okay, look at the next one. Suppose x and y are again v. V may be the real or complex. Your target is to find the value of norm of y. तो हमें कोई ऐसा रिलेशन ढूंढ लेते हैं जिसमें x plus y भी आता हो, x minus y भी आता हो. By using the parallelogram identity. Fine. So I can substitute the values at the parallelogram identity. Norm of 4 square, fine, plus 6 square is a twice 9 plus norm of y square. So यहां से तो आप निकाल ही सकते हो y की वैल्यू. So 16 plus 36, that will be 52 divided by 2, which is equal to 9 plus norm of y square. तो ये कितना हो गया 26. 9 I can put on the left hand side, norm of the y square. So norm of y is always a positive value. So it's the root of 17 is the right answer of the problem. Fine. Otherwise, what is the second method is, you can start from the norm of x plus y square. Fine. इसको आप x plus y, fine, and you can start from the x minus y square, norm of, fine, और दोनों की ब्रैकेट को ओपन करिए एंड सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द नॉर्म x नॉर्म y, उससे आप भी निकालोगे तब भी सेम आंसर आएगा. Okay, suppose x and y are the vector, are the inner product space. Proof that whenever the norm of ax plus by for all reals if norm x is equal to norm y. So what is given to you? Norm of ax plus by. So I can put scaling on the both side. I can write this value. Fine. तो इसको लिखते हैं खोल के. सबसे पहले आप ax के साथ लिखेंगे. So that will be ax कॉमा ए एक्स. ये लिखना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए. सेकंड ए एक्स को बी वाई के साथ, ए एक्स कॉमा बी वाई प्लस फिर वाई के साथ बी वाई कॉमा ए एक्स प्लस बी वाई कॉमा बी वाई. Similarly, you can put on the right hand side.
तो सबसे पहले मैं एक लेफ्ट साइड को लिख लेता हूं. अगेन, what is the value of the alpha x comma y? It is alpha x comma y. Fine. And what is the value of the x comma alpha y? By using the inner product definition, it's alpha complex conjugate. फाइन. लेकिन यहाँ पे a और b क्या है आपके? रियल. तो जैसे आप पहली वाली वैल्यू को लिखोगे, ये a तो बाहर हो जाएगा बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, दैट इज a इज आउटसाइड. तो ये क्या बन गया? x कोमा ax. फाइन. अब यहाँ पे इस a को बाहर निकालने के लिए यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी अल्फा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. बट यहाँ a इज माय रियल, so what is the complex conjugate of the a? Is still as the a. So that means I can write the first value is a square x comma x. Similarly, I can write for this case a is outside, b complex conjugate. What is the complex conjugate of b? That is again the b. So the second value will be ab xy plus third property will be ba yx, and the fourth property will be b into b, that's a b square y comma y, which is equal to right hand side. Fine. So bx into bx, that is a b square x comma x plus bx into bay, that is a b of a x comma y. Fine. Plus ay into bx, so a b y and x, and the last case is b square y and y. ऐसे लिखा जाएगा ना. Fine. Now you can see a and b are the real, so that means ab is equal to ba. Fine. रियल में तो कम्यूट होता है ना आपके पास, तो यू कैन सी ab is equal to ba, so these two numbers will be cancelled. ab is equal to ba, so these two numbers will be cancelled. So the right answer is, that is number is a square norm of x square plus b square norm of y square, which is equal to a square, or you can say b square norm of x square plus a square norm of y square. So what you can do, I can put a square minus b square. ये लिख सकता हूं ना इसे मैं, दोनों को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया. फाइन. क्लियर? इज इट ओके? नाउ a square minus b square, because it is for all, so I assume a is not equal to b. That means norm of x square minus norm of y square is 0, which implies norm of x is equal to norm of y, because norm is always the positive number. Look at the next one. V is the Euclidean space. Euclidean space means here v of f, that means f is my r. फाइन. आप पूरा डिटेल में यूक्लिडियन स्पेस और यूनिटरी स्पेस के लिए अबाउट द कंसेप्ट इनर प्रोडक्ट का लेक्चर सुन सकते हो दोबारा से. तो दैट्स वेरी सिंपल. फाइन. इसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें अगर हम, तो कैसे लिखा जाएगा ये? दैट विल बी एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई. इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट, दैट नंबर विल बी एक्स एंड एक्स प्लस एक्स एंड वाई प्लस वाई एंड एक्स and y and y. Fine. Now because my space is R, Euclidean space, fine. So what is the value of the x comma y? That's a 0. That number is my norm of x square. Fine. इसको क्या लिख सकता हूं मैं? x comma y. Fine. Because it's a real, so real के अंदर 0 का complex conjugate is a 0. That will be norm x square plus norm y square is the right answer, because this value will be 0, this value will be 0. Look at the next one. Now in this case it's a unitary. Fine. So again we will start from our target is to evaluate this x plus y, x minus y, x plus iota y, x minus iota y. इसको फिर से लिख लेते हैं खोल के, x plus y, x plus y. So that will be x and x. I can write as a norm of x square plus xy plus yx, y and y is a yy. So y and y I call as a norm of y square. Fine. Make sure students they are in the complex field. Complex field means if you write as a xy, that is complex conjugate of the yx. Clear?
Similarly, how you can write that? That is my x minus y, x minus y. So if you open that, x and x, norm of x square minus xy minus yx minus minus plus norm of y square. Fine. Similarly, how you can open that? I can write as a x plus iota y, x plus iota y. फाइन, इसको मैं थोड़ा अलग करके लिख रहा हूँ. फाइन, ओके, मैं पहले चलो इसको कैसे लिखेंगे खोल के. x एंड x, फाइन, प्लस x एंड iota y प्लस iota y कॉमा x एंड iota y कॉमा iota y, ऐसे ही लिखेंगे. अब मैं इस पे अब फिर से वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ. अल्फा x कॉमा y, it will be alpha is outside x comma y, and second is x comma alpha y, it will be complex conjugate of the alpha and xy. Fine, so let's start that. ये तो norm of x के लिए हो गया आपका. Alpha complex conjugate is outside, that will be xy. यहाँ से first product ही है, that is outside y and x, प्लस इसका पहला कंपोनेंट आयोटा ऐसी बाहर हो गया, और ये सेकंड वाले के लिए आयोटा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर हो गया. फाइन, तो पहली नंबर क्या बन गया? नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर. व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा? दैट इज अ माइनस ऑफ आयोटा. फाइन, दैट्स रिमेन्स द सेम. फाइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द आयोटा, दैट इज अ माइनस आयोटा, लेकिन एक आयोटा बाहर लिखा हुआ है, दैट इज आयोटा स्क्वायर, इज अ -1, दैट इज अ नॉर्म ऑफ y. ठीक है. सिमिलरली x माइनस आयोटा y स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे? दैट विल बी x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y. तो यहाँ पे जो आयोटा लिखा हुआ है यहाँ पे रिप्लेस कर दो माइनस आयोटा से, तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन दिस वैल्यू. नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज ऑफ द x प्लस आयोटा y इन द राइट हैंड साइड. फाइन, तो देखो क्या करना है आपको. x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करना बेसिकली. मतलब इस दो इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, और इन दोनों को आपस में माइनस करना है. जैसे माइनस करोगे ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे. फाइन, तो अब जैसे इनको माइनस करोगे दैट विल बी द ट्वाइस. फाइन, देखो ना, ये दोनों को माइनस करो तो दैट विल बी द ट्वाइस ऑफ x एंड y. इन दोनों को माइनस करेंगे, ट्वाइस ऑफ y एंड x. फाइन, इस वैल्यू को आयोटा से मल्टीप्लाई करिए, दैट्स आयोटा स्क्वायर -1, दैट इज अ प्लस x कॉमा y, इट्स अ -1 y कॉमा x. इस लाइन को आपको माइनस ऑफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स अ माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट्स अ प्लस हो जाएगा फिर. फाइन, एंड दिस प्लस आयोटा स्क्वायर, दैट्स अगेन द माइनस y कॉमा x. Is it okay? Now you can see 2, 3, 4. Is it okay? No, ये तो इसको माइनस ऑफ आयोटा से करा ना, तो दिस प्लस, इट्स अ प्लस आयोटा स्क्वायर, यस इट्स अ माइनस. सो इफ यू सॉल्व देम यू विल गेट द आंसर इज, ये कट गया ना आपके पास, माइनस वाई एक्स और 2y x कैंसल, तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज 4 टाइम्स ऑफ द yx, एंड दैट्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट. चलिए सेकंड पार्ट. Your target is to prove as a real component of the xy. So if the z is my complex number, find how you can write as the real component of the z. A real component of the z is basically x, and I can write the x is z plus, यही तो लिखा जाएगा ना. So now I can write the real part of the vector inner product x comma y, that will be twice xy plus complex conjugate of the xy. यही तो होगा ना by definition. Similarly, how you can write the real part of x comma iota y, again by using the same definition, that will be x comma iota y plus x comma iota y. Is it okay? Now I can use this. इसका क्या होगा? iota complex conjugate outside आएगा, that will be negative x comma y plus
इसका क्या बाहर आएगा, अगेन आयोटा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दैट विल बी माई माइनस आयोटा x कॉमा वाई डिवाइडेड बाय 2. फाइन. अब माइनस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होगा, इस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, that is a plus iota, so the numerator becomes x comma y plus iota x comma y complex conjugate divided by 2. यही होगा. अब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में फिल कर दो आप, दैट विल बी, इसको आप आयोटा से मल्टीप्लाई करिए इस इक्वेशन को एंड यू कैन ऐड दैट. तो आप देखो क्या एक्सप्रेशन बन गया आपके पास. फाइन. इस वाली लाइन को आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है आपको. तो जैसे आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर -1 तो +1 हो गया ये. फाइन. दोनों को ऐड करोगे और ये आपका आयोटा स्क्वायर, इट विल बी कैंसल आउट. सो योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन विल बी रियल पार्ट ऑफ x comma y is x comma y. Fine. So that's a very simple. You can multiply this by iota, this multiply by 1 and add it. So you will get the required expression. Fine. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छी लगी होंगी. फाइन. यू कैन डू इट मोर प्रैक्टिस. Try to learn the concept in a very simple manner. We will see the next lecture on the Cauchy-Schwarz inequality. If you really want, let me know in the comment box. Fine. I hope you can share this video with your friends. Like and comment on the videos. Best of luck, students. Thanks for the watching.